and Sindh in particular. In early 2020, we were exposed to COVID-19 pandemic. Karachi was faced with the highest ever rainfall in the summer of 2020. The districts of Shahid Benazirabad, Sangha, Mirpur Khas, Badin, Umarkot, and Tharparkar were flooded in the same year due to torrential rains. And so we are all aware that in 2022, floods of unprecedented magnitude severely affected almost two-thirds of our province, resulting in a grave human tragedy. On top of these challenges, we had a borderline hostile government for almost 4 years of our previous tenure. Despite these challenges, we were able to perform. This was due to the resilience of the people of Sindh and the resolve of the provincial government and the leadership of the Pakistan People's Party. So before I talk about budget for the next year, I would like to talk about two specific things. First of all, highlight some of the major achievements during our last tenure, and especially talk about the floods of 2022 and how the government of Sindh, the leadership of Pakistan People's Party, and the people of Sindh faced this great human tragedy. Mr. Speaker, I'll start with the health sector. Sindh government takes pride in having the best tertiary healthcare system in the country. Our public sector hospitals are catering to patients from all over the country without any discrimination. Sindh government started free ambulance service in 2017 under a public-private partnership named as Sindh People's Ambulance Service, which carried out its operation in Karachi, Thatta and Sijawal with a fleet of 85 ambulances till 2021. It was later transformed into Sindh Integrated Emergency and Health Service. Presently, a total fleet of 315 state-of-the-art ambulances is available with Sindh Integrated and Emergency Health Services. In remote areas of 11 districts, mobile health services were provided free of cost via 26 mobile hospitals, through which more than 2.5 million patients have been served in the last 5 years. The Jinnah Postgraduate Medical Center, the National Institute of Child Health, and the National Institute of Cardiovascular Disease combined have more than 4,000 beds today. In last year alone, 3.5 million patients benefit from the free of cost service. Total budget of these three hospitals has been enhanced to rupees 25.75 billion from rupees 1.9 billion in 2013 when these hospitals were transferred to the provincial government. Operational surgical systems along with 9 CT scanners, 9 MRI scanners, 9 angiography units are functional. During financial year 2022-23, rupees 1.7 billion were provided for purchase of essential equipment for surgical complex of Jinnah Postgraduate Medical Center and for procurement of additional cyber knife with the latest model. Currently, JPMC possesses 2 cyber knives and 1 robotic-based surgical system. A state-of-the-art JPMC surgical complex was completed in 2020, which was inaugurated by Chairman Bilawal Bhutto Zardari. The Sindh Institute of Cardiovascular Disease. We've got 9 satellite centers of SICVD that have been established across Sindh with a patient load of 5 million to date. These are 5 million lives that have been catered for and many of them saved. Moreover, 29 chest pain units have been established across Sindh. Stroke intervention program along with installation of latest CT scan machines has been started at Tando Muhammad Khan and Sakhar. The Sindh Institute of Urology and Transplantation, SIUT, has a 1,200-bed comprehensive healthcare system, and 72 departments have become Pakistan's largest dialysis center, with 1,500 dialysis are carried out daily, and more than 14.5 million patients were served during the last 5 years. Rupees 47.7 billion have been provided by Sindh government to SIUT in the last 5 years. Today, SIUT houses Pakistan's largest transplant center, dedicated oncology hospital, pioneering work in robotic surgery since 2017, state-of-the-art pediatric cardiology,
SIUT's further expansion includes medical center at Sakhar, dialysis center at Shikarpur, and new children's hospital in Karachi. Sir, the medical center at Sakhar and the dialysis center at Larkana were both inaugurated by Chairman Bilawal Bhutto Zardari. Peer Abdul Qadir Shah Jilani Institute of Medical Sciences, Gampat, is the only healthcare institute of Pakistan providing 5 human organ transplant facilities under one roof. These are liver, kidney, bone marrow, lung, and corneal transplants. A state-of-the-art nuclear medicine department has been established at Gambat. In addition, a state-of-the-art cardiothoracic department along with robotic-based advanced cath lab has been established. Neuro-OT complex has been established. Department of orthoscopy, hip joint and shoulder joint replacement has been established. Liver transplant tower is completed. Stem cell gene therapy center has been established. Sindh Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, SIPMNR, offers rehabilitation services to the people of Sindh since 2007. They serve people with disabilities. It established the Center for Autism Rehabilitation and Training Sindh. C-Arts for providing free service to autism-affected children, thus making C-Arts the biggest network in South Asia for autism patients. C-Arts is running 5 centers in the province, 3 in Karachi and 1 each in Hyderabad and Gambat. Furthermore, C-Arts centers will be made functional at Shaheed Hyderabad, Sakhar and Larkana in the next financial year. Sindh government, in a joint venture with Parents Voice Association Ujala, has taken initiative of building the first free residential complex on a 4,000 square yards plot in DHA, Karachi, for persons with disabilities. The required funding of rupees 200 billion for construction has already been released in the last financial year. The Sindh Institute of Child Health and Neonatology has the largest level 3 neonatal intensive care unit in Pakistan with 77 bedded neonatal ICUs and 40 bedded pediatric ICU combined, all connected to incubators and supported by ventilators. SICHN has served over 230,000 patients since 2022. The SICHN started from Karachi and now expanded to Sakhar and Shaheed Benazirabad. Intensive care units will soon be established in Larkano Civil Hospital, Karachi, Sobraj Hospital, Karachi, and Mother and Child Hospital, Azam Basti, Karachi. A children's hospital in Mirpur Khas will also soon be functional. So I just want to talk about SICHN. Its Kurangi Center has more facilities for emergency than all the private hospitals. And I'm talking about the Aga Khans and the South cities combined in one place, and it's all free of cost. Moreover, SICHN has Pakistan's first Sharia-compliant human milk bank has also been launched, setting new standards in neonatal care. Another success story of the government of Sindh is the Child Life Foundation. Sindh government has partnered with Child Life Foundation, resulting in every child in Sindh being within 30 minutes reach of emergency care 24/7 free of charge. Modern emergency rooms in 9 teaching hospitals in Karachi, Hyderabad, Shaheed Benazirabad, Larkano, and Sakhar have been established in collaboration with Life Foundation. 206 telemedicine satellite centers, all tehsils of Sindh, all tehsil hospitals across Sindh are linked 24/7 under system. Till date, more than 6 million children have been treated in emergency rooms of government hospitals across Sindh in partnership with Child Life Foundation. Latest research by US-based Policy Global Health acknowledges high quality of pediatric emergency rooms at Sindh government hospitals operated in collaboration with Child Life. It is highly satisfying for us that in the 28th session Conference of Parties COP28 held in Dubai last year, Child Life Foundation was among the 3 finalists from 5,000 plus applicants who had made some difference in the lives of people. We lost to, I believe it was an Italian or a Turkish firm, but we came second in more than 5,000 people who participated. I'll briefly talk about the education sector.
A major problem was quality teachers. And what we've done is that we've hired or recruited more than 60,000 teachers, and they've been appointed in 700 schools, and these 700 schools have been upgraded to secondary and higher secondary schools. 700 shelterless schools have been constructed in our last tenure. Teachers' appointment on contract basis from 2008 to 19 have been regularized. 106 secondary schools with assistance of USAID and 76 girls elementary school with assistance of JICA have been constructed. We established 4 more public sector universities, namely Sheikh Ayaz University, Shikarpur, Begum Nusrat Bhutto University, Sakkar, Government College University, Hyderabad, and Shahid Allah Bakhsh University at Jamshoro. Under the Benazir Bhutto Shahid Human Resource and Research and Development Board, more than 150,000 youths have been trained. Through the Sindh Education Foundation, the government of Sindh has achieved notable success in terms of enhancing access to quality education for approximately 900,000 children through a network of 2,890 schools and centers. SEF, in partnership with Teach the World Foundation, has launched an out-of-box solution which has already established 50 micro schools where 5,000 out-of-school children have been enrolled. And I would suggest that these Teach the World Foundation schools be visited. We've already done 50. By the end of this year, we'll complete 100. These are children who are older children who've been out of school, and we take them out from the streets, bring them to our schools in areas where they've never gone to school, and the change that you see was phenomenal. Within weeks, the children who've never been to school, by use of assisted devices, start to not only read and write, but also do mathematics. And hopefully I will demonstrate this at the in my budget winding up speech, because this is one area that we have been very successful and we are proud of it. The teachers licensing program. Sindh government has launched a public-private initiative to improve the quality of education in government school. Through this initiative, a teaching license system has been introduced. This collaboration is of first type in Pakistan, whereby only B.Ed graduates are eligible to take the license test, thereby establishing teaching as a profession. Previously, teachers were inducted at government pay scale grade 14, but now grade 16 posts have been created exclusively for licensed teachers. As the Honorable Education Minister has it, we have a license for everything, but we don't have a license for teachers. And that is why this is something that only the province of Sindh has done. And inshallah ta'ala, we shall see, reap the fruits of this in the near future. The Works and Services Department, a Sindh Road Network Master Plan has been developed. And in the last 5 years, 5,636 kilometers of road have been constructed. In the Irrigation Department, in the last 5 years, 174 schemes costing rupees 79 billion were completed for lining of 3,675 miles of irrigation canals. 5,880 cusics of water was saved due to complete lining of these canals at the rate of 1.6 cusics per mile in the last 5 years. In the energy sector, we now have a total of 3,240 megawatts added to the national grid produced from indigenous Thar coal, which is at the moment the cheapest electricity being produced in Pakistan. All our Thar coal projects are at the very top of merit order and evacuating power for the entire country. We've constructed 12 wind power projects, 3 solar power projects, and solar hybrid green hydrogen project and wind solar hybrid project has been added to the national grid. In addition, one area that I would like to mention is our people's bus service. We, as you remember, Mr. Speaker, you had started this initiative and then your successor, the Transport Minister, took this as a challenge. And today we have a bus system, and the problem is that the demand is so high that we are not able to keep up with the demand. But inshallah ta'ala, we've kept money in this budget for new buses, and we will provide buses for these comfortable buses for people to travel comfortable and cheap. मैं उर्दू में तकरीर मौजूद है, ये कई बार हो चुका है, मेरे ख्याल है मुझे बीच में ना मैं वाइंडिंग अप पे सारा उर्दू में दोबारा आपको बता दूंगा. इंटरप्ट नहीं करते स्पीच में, नहीं
स्पीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज, बैठ जाएं Sindh आप, boasts the best आप बैठ जाएं PPP प्लीज। framework in Pakistan, which has been recognized internationally. I would like to highlight some of the major achievements of Sindh government, which are made possible via public-private partnership. Sindh has a diversified PPP project portfolio, which covers education, health, roads, bridges, water, energy, transport, information technology, industrial and economic zones, and forestation. It has grown from a mere 5 billion in 2010 to more than 700 billion rupees in 2024. Currently, projects worth rupees 142 billion are under construction, while projects worth more than rupees 267 billion are under investor solicitation stage and expected to be outsourced, awarded to private partners by June 2025. Some of the significant achievements under the PPP program are the Ghotki Kankot Bridge, which is under construction. It is a length of 12.2 kilometers, and it is going to be the longest bridge over a river in Pakistan. Even currently, that record, the Jirk Mulakatiyar Bridge is the longest bridge over a river in Pakistan, and which is only 2 kilometers or less than 2 kilometers. This is going to be 12.2 kilometers long bridge. The NED Technology Park in Pakistan is the first technology park with the cost of rupees 25 billion. This innovative collaboration with the Kuwait Investment Authority will surely enhance IT sector overreach. Malir Expressway project's first segment of 15 kilometers stretching from Qayyumabad to Qaidabad is going to be completed in 2024 at a cost of rupees 27.58 billion. Nabisa to Vajiyar project has been designed to provide water supply to independent power producers located in Thar block at a cost of rupees 69.5 billion. M9 M5 Link Road project is 22 kilometers road project. Its toll collection has commenced for the initial 7.2 kilometers. The last part, just the termination, there's a flyover to be constructed for on the M9, and inshallah that work has also been given as a deposit work, and it will start and be completed soon. Dabeji Special Economic Zone project, comprising 1,530 acres industrial zone at Dabeji Thatta under the China-Pakistan Economic Corridor. So now I would briefly like to talk about the unprecedented floods of 2022, how the valiant people of Sindh weathered these floods, the resilient people of Sindh, how they came out of these floods and came out stronger. Sir, we had hardly recovered from COVID-19 pandemic and the 2020 floods when in the year 2022, we were hit with a grave human tragedy in the shape of unprecedented floods. These calamities have tested the strength and unity of our people, but I'm proud to say that Sindh has shown its true spirit in the face of adversity. The floods that struck Sindh caused massive devastation, impacting 70% of the province. Over 2 million houses were damaged or completely destroyed, leaving 12 million people homeless and vulnerable. Our schools, the bedrock of our children's future, suffered immensely, with more than 50% of them being partially or fully destroyed. Over 8,400 kilometers of roads were washed away, disrupting transportation and access to basic amenities. The agricultural sector, which sustains the livelihood of many in our province, faced significant losses, with thousands of tons of ready-to-reap crops destroyed. We knew that we couldn't solve all the problems overnight, but we committed to alleviate the suffering and started the journey of rehabilitation and recovery. Our initial efforts focused on rescue and rehabilitation of the affected people, aimed at minimizing losses and prevention of flood-induced pandemics. We accordingly recalibrated our development portfolio and rechannelized recurring revenues for rehabilitation. Around 117 billion rupees were spent on these operations. Continuing the efforts, our government allocated more than rupees 900 billion on projects of reconstruction of roads, hospitals, schools, irrigation and other infrastructure through our annual development program. Here I would like to thank our chairman Bilawal Bhutto Zardari, who reached out to the international community and friendly countries as the foreign minister of Pakistan and helped us get donors funding. We would not have been able to respond effectively without his leadership and endeavors. Our approach to rehabilitation has been comprehensive and strategic, addressing key issues critical for holistic and sustainable recovery of our beloved province. I would like to highlight some of the significant initiatives that we have taken.
In the works and services area, emergency flood assistance program amounting to rupees 46.3 billion with the assistance of Asian Development Bank has been approved, whereby 1,662 kilometers road network badly affected by the 2022 floods is rehabilitated. Sindh Flood Emergency Rehabilitation Project. The Sindh Flood Emergency Rehabilitation Project was approved for a duration of 3 years with World Bank as financing partner. In the fiscal year ending 23-24, following milestones have been achieved. In the infrastructure side, damaged roads, total 31 in number, are completed. 44 of the roads will be completed in 19 districts by 30th of June 2024. 57 water supply drainage schemes will be completed in 5 districts by 30th of June 2024. Livelihood restoration, 90,778 beneficiaries have been facilitated through cash for work program in 14 districts. 48,000 more beneficiaries will be facilitated through cash for work program in 14 districts by 30th of June 2024. Through this program, short-term opportunities are provided to people for earning income by participating in disaster cleanup and restoration of community-level infrastructure. For institutional strengthening, 16 satellite stations have been completed. 4 district hospital facilities will be completed in 4 districts by June 30, 2024. Moreover, refurbishment of government hospital emergencies have been completed in 10 districts. The Sindh Flood Rehabilitation Project, the irrigation side, the government of Sindh took immediate repairs of 33 works, plugging, closing and strengthening 208 bridges, relief cuts and repaired pumping stations during the current financial year. This also included 32 critical works severely damaged through the works of 2020 floods of 2022 and that needed immediate rehabilitation. मैं जैसे भाई ने कहा थोड़ा सा इसको फर्दर इलैबोरेट करना चाहता हूं. जो 2022 का फ्लड आया था स्पीकर साहब, हम सब उससे अफेक्ट हुए थे और लग रहा ये था कि ये इतना बड़ा सानिया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि शायद हमें सालों नहीं डेकेड्स लगेंगे, दसियों साल लगेंगे इससे निकलने में. लेकिन सलाम है सिंध के लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी एडवर्सिटी में उसी साल, मुझे अच्छी तरह याद है, अक्टूबर या नवंबर 2022 था, अक्टूबर का एंड था, मैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ हेलीकॉप्टर पे जा रहा था और पानी देख के उन्होंने सिंध में कहा ये तो लगता है कि आप 1 साल इस पानी को नहीं निकाल सकेंगे और आप गंदुम क्या कॉटन भी आपकी शायद ना हो सके. लेकिन सिंध के लोग थे, हुकूमत का रिजॉल्व था और सबसे ज्यादा हमारी लीडरशिप आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कांस्टेंट एडवाइजरी थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो पानी निकला, हमारा 2022-23 वाला रिकॉर्ड गंदम की फसल थी और 23-24 वाली उससे भी बड़ी गंदम की फसल हुई है. आपने देखे होंगे इस वक्त नंबर्स आए, हमारी जो टारगेट्स थे जीडीपी ग्रोथ के वो कहीं पे भी मीट नहीं हुए सिवाय एग्रीकल्चर के, जिसने एक्सीड किए अपने टारगेट्स और ये वजह थी. और उसमें एक बड़ी कंट्रीब्यूशन सूबा सिंध की थी और ये वजह थी और ये सिंध के लोगों को सलाम है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सहारा दिया अपनी मुश्किलात के बावजूद. सर इसके साथ में ये एग्रीकल्चर में 80% of standing crops in the province of Sindh we took prompt action for revival of agriculture sector. In the first instance, minimum support price of wheat was increased from 2,200 to 4,000 to encourage farmers to grow wheat for Rabi season. A total of 147,446 farmers were provided with rupees 3.447 billion through Benazir Income Support Program for reimbursement of wheat seed. So इसके बाद मैं ये उर्दू में बता देता हूँ. मेरा ख्याल है जो सबसे कामयाब, सबसे अच्छा और सबसे यूजफुल प्रोजेक्ट जो शायद सिंध में नहीं पूरी दुनिया में हुआ है, मैं बताऊंगा क्यों. ये हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग ऑफ फ्लड अफेक्टीज. और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सब दोस्तों को दे दूं. जब फ्लड आया 2022 का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने अपने सारे दौरे मंसूख किए और पूरा सिंध उन्होंने वो गए और उन्होंने जहां जाते थे लोगों की सबसे बड़ी जो डिमांड होती थी
गरीबों की जिनके कच्चे घर थे कि जी हमारा घर गिर गया, हमें घर बना के दे। एक दिन चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि जी हमने ये घर बना के देने हैं, आप जरा इस पे वर्किंग करें। मैंने रात को बैठ के वर्किंग की, कुछ लोगों से बात की, पता किया कि कितने घर, अंदाजन उस वक्त तक तो अंदाजा भी नहीं था, एक एस्टिमेट लगाया, उस एस्टिमेट से भी ज्यादा घर गिरे थे। जब वो देखा और पैसे देखे कि कितने लगेंगे, तो मैंने कहा मैं मुनासिब है कि बात ही ना करूं इसकी आगे, और चेयरमैन साहब शायद भूल जाएंगे। लेकिन अगले दिन जब मिले तो पहली चीज मेरे से ही पूछी कि आपने क्या किया। तब मुझे पता चला कि जी अब ये करना पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले अगेन चेयरमैन साहब का कि उन्होंने साथ दिया। हम जीरो से शुरू हुए थे, हमारे पल्ले कोई 1 रुपया नहीं था फॉर दिस स्कीम। और मैं आपको बताऊं, इससे इतने ही बड़े फ्लड्स, खैर ये सबसे बड़ा था, लेकिन इसके टक्कर के फ्लड्स 1976, 1994, 2010, 2011, 2020 वाला भी फ्लड भी आए थे। कभी किसी हुकूमत ने घर बनाने की बात नहीं की, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैंने घर बना के देने। हमने शुरुआत की, तकरीबन 21 लाख घर हैं जो डैमेज्ड हैं। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल होगा। वर्ल्ड बैंक से बात की, चेयरमैन साहब से मदद ली। जनवरी 2023 में हमने इस पे एक्चुअल काम, इसलिए तब तक तो हम पानी को इवैक्यूएट करने में लगे थे, एक्चुअल काम शुरू किया जनवरी में ही। हम गए जिनीवा, उधर हमने अपना पहला केस तैयार किया, और चेयरमैन साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन सब ने हमारी उस ब्रीफ के बाद इस प्रोजेक्ट की डोनर्स को सपोर्ट की जो भी थे। एज अ रिजल्ट उस कमरे से निकलने से पहले $500 मिलियन की कमिटमेंट वर्ल्ड बैंक ने दी हमें शुरू में। तो हम जीरो से शुरू हुए, $500 मिलियन हमने जमा किए, और उसके बाद आज तक $200 मिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने दिए, $400 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए, और हमारे अपने 50 अरब रुपए हम और 50 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट से। वो खैर लंबी स्टोरी है कि उनके अभी पैसे नहीं आए, लेकिन उन्होंने अगले साल वादा किया है कि दे देंगे। हमने अपने 25 अरब खर्च किए, 25 अरब इस अगले साल में रखे, और हम इंशाअल्लाह ताला तकरीबन, अभी भी हम कुछ शॉर्ट हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये इतना इफेक्टिव प्रोग्राम है कि इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी, हमने प्लान इसको ऐसा किया था कि इतना ट्रांसपेरेंट रखें कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आके कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सके। किसी ने अगर एक घर भी किसी को मदद करनी है वो भी मदद कर सके। और इस वक्त तक हम तकरीबन 7,700 घर प्राइवेट सेक्टर से फाइनेंस करा चुके हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि इतना अच्छा डेटाबेस है हमारे पास कि एक डॉक्टर थे टंडो मोहम्मद खान के रहायशी, जो अमेरिका में कुछ 10-15 साल से है। उनका गांव भी डूब गया था, उनको पता चला तो उन्होंने कांटेक्ट किया सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज को, और कहा कि जी मैं टंडो मोहम्मद खान के अपने गांव या उस यूनियन काउंसिल में 10 घर सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि ये खवातीन जो है आइदर विडोड और डिवोर्स, जो बच्चों का ख्याल कर रही है, उनको जाए। हमने उन्हें इमीडिएटली लिस्ट भेज दी, इसलिए कि हमारे पास वो डेटाबेस मौजूद है। इन 21 लाख में से 8 लाख खवातीन हैं जिनको हम घर बना के दे रहे हैं, और उन्होंने उनको सपोर्ट किया। इसका मैं थोड़ा सा क्वांटम बताना चाहता हूं दोस्तों को कि मैं क्यों कह रहा हूं ये दुनिया का सबसे, आज तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं हुआ है। इससे पहले नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, हुकूमत ने 8 लाख घर बनाए थे उसके लिए, उनको 5 साल लगे थे। हमें अभी 1.25 साल या चले 1.5 साल हुआ है बनाते हुए। हम 1,25,000 कंप्लीट कर चुके हैं। 5.5 से 6 लाख के दरमियान घर हमारे इस वक्त कंस्ट्रक्शन में, और हमारे पास फंडिंग तकरीबन 15-16 लाख की मौजूद है इस वक्त। बाकी आखिरी 4-5 लाख की हम अरेंज कर रहे हैं, और ये काम रोजाना हम 1500 घर कंप्लीट करते हैं, जो हम बढ़ा के 3,000 पे ले जाना चाहते हैं। इसका क्वांटम क्या है? ये घर की जो टोटल हमने आबादी निकाली, इसलिए कि हमारे पास जैसे मैंने बताया डेटाबेस है, तकरीबन 1,60,00,000 लोग मुस्तफीद हो रहे हैं इससे।
इनको हम फ्री लैंड टाइटल, जो मैं बताना भूल गया, चेयरमैन साहब की हिदायत के मुताबिक इन सबको मालिकाना हुकूक भी उस जमीन के दे रहे हैं, जहां पे भी गवर्नमेंट की जमीन पे बैठे उनको मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं, खवातीन को, वो उस घर की जो खातून है उसको। और ये 1,60,00,000 घर लोगों को घर बना के देने का मतलब है कि दुनिया के 154 ममालिक से बड़ी आबादी, यानी अगर ये सारे हम एक मुल्क बना दें तो 154 मुल्क की आबादी इन लोगों से कम है जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त और घर बना के दे रहे हैं। तो दिस इज बाय फार द बेस्ट सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन द इंटायर वर्ल्ड। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट और इंशाल्लाह ताला इसी मॉडल को हम लेके आगे जाएंगे। और ये घर कैसे बन रहे हैं, ये कोई महल बना के नहीं दे रहे, एक कमरा है, लेकिन वो एक कमरा है क्लाइमेट रेजिलिएंट। जो फ्लड लेवल थे उससे भी 2 फीट ऊपर हम उसकी प्लिंथ बनवाते हैं उनसे, वो खुद घर बनाते हैं, कोई ठेकेदार नहीं है इसमें, किसी को ठेका नहीं दिया जा रहा। इन सब के तकरीबन 8.5 लाख के बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। ये सब लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी आ गए हैं। जिन लोगों ने कभी बैंक देखा नहीं था, उनको बैंक अकाउंट का पता नहीं था, उनके बैंक अकाउंट्स खुले हैं। ये सारी चीजें दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुई और ये सिंध हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे और उनकी कंप्लीट गाइडेंस में ये पूरा किया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट और इंशाल्लाह ताला हम इसको और बेहतर करेंगे। और उन इलाकों में जहां कच्चे घर लोगों के हैं, शहरों में जो कच्ची आबादियां हैं, उसके लिए भी हमने एक स्कीम बनाई है कि उनको भी हम पक्का करके दें ताकि वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। और इंशाल्लाह ताला ये जो अगले 5 साल हैं इसमें हम ये अचीव करने में कामयाब होंगे। सर, मैं वेरी ब्रीफली आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो कि मेजर, जैसे ही हमारी हुकूमत आई थी, द फर्स्ट थिंग दैट केम वाज रमजान। So the government, our government, I entered office on 26th of February 2024, and the holy month of Ramzan was approaching within 2 weeks. In order to provide relief to the people of Sindh, the Ramzan relief package worth rupees 22.1 billion was provided as targeted monetary assistance to 4.42 million families through the Benazir Income Support Program. Again, a very transparent system. The Benazir Income Support Program, again, is the single most recognized program in the world for social protection. कई सारे मुल्क हमें कॉपी कर रहे हैं और ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की ब्रेन चाइल्ड थी जब वो सदर पाकिस्तान थे कि उन्होंने ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बहुत बड़ा मसला था उनकी पेंशन्स का। उस सिलसिले में हमने एडिशनल फंड्स तकरीबन 22 अरब रुपए उनको दिए। टोटल ओवरऑल इनक्रीज 55 अरब रुपए हुई है करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और इस तरीके से हम 11,657 रिटायर्ड एम्प्लॉइज के पेंशनरी ड्यूज जो हैं वो खत्म कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला अगले साल के पहले महीने में all pensionary liabilities will be cleared and there shall be no pending pension claims जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉइज होंगे उनके। सर, हमारा आइन कहता है कि जी केयरटेकर गवर्नमेंट 2 से 3 महीने के लिए आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे सूरत हाल हुई, सेंसस हुआ, सेंसस के और ये भी आईनी रिक्वायरमेंट थी कि जी सेंसस के बाद डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, इस वजह से डिले हुए। So because of the prolonged tenure of the caretaker government from August 23 to the end February 2024, the entire development activity in the province was halted because of ban imposed by ECP on approval of new schemes and execution of ongoing schemes where tenders were not initiated. However, when we assumed the government, we focused on resuscitating the development regime and set the ball rolling again. We made significant strides in infrastructural and social sector development, and the pace of development activity resulted in highest ever development spending in province for the current financial year. Sir, हमने क्या किया था जब जुलाई 2023 में गवर्नमेंट खत्म होने में 1.5 महीने से कम रह गया था और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने इंस्ट्रक्ट किया। उस वक्त 1500 से ऊपर नई स्कीम्स थी और उन्होंने 1.5 महीने में, if I remember correctly, 764 schemes अप्रूव की और we were ready to work. हमने जो ongoing schemes थी उसकी adequate financing रखी। Unfortunately, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया
कि जी नई स्कीम्स की अप्रूवल भी बंद कर दो, जो टेंडर नहीं हुई अब अप्रूव्ड स्कीम्स असेंबली ने अप्रूव की हैं। इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुंचता था कि असेंबली की अप्रूव्ड स्कीम्स को वो बंद करे कि ना आगे चलाओ, लेकिन जी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। हम कुछ कहते थे तो कहते थे कि जी आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। इसके बावजूद इस साल, और मैं आगे बात करूंगा व्हेन वी आई टॉक अबाउट नंबर्स, हमारा हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट स्पेंडिंग हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। In a previous administration, the collective focus remained on combating natural disasters. Now, Sindh is poised for growth. So we aim to enhance provincial revenues through resource mobilization by way of introducing few minimal taxes, rationalizing the existing ones, and equalizing the tax rate with sister provinces and federal authorities. The economic revival requires limiting ourselves to essential expenditures, completing capital projects, and making Sindh an investment destination. Sir, now I would like to unveil the fiscal plan of the fourth consecutive tenure of the Pakistan People's Party government in Sindh, starting from the revised estimates of current financial year. Mr. Speaker, sir, the revised estimates for provincial expenditure have been proposed at rupees 2,252 billion for the year 2023-24, as against the budget estimates of rupees 2,282 billion. It includes revenue, capital, and development expenditure. Now I would like to present the main features of provincial expenditure. For current revenue expenditure, revised estimates for the year 2023-24 have been pitched at 1,584.2 billion, representing 25% increase against current year's budget estimates of 1,411 billion. The increase is mainly due to employee-related expenditure. For current capital expenditure, revised estimates for the year 2023-24 has been proposed at rupees 139, showing an increase over current financial year's budget of rupees 136 billion. This increase is due to surging rupee-dollar parity within the range of rupees 275 to rupees 307 per US dollar, raising the expenditure towards repayment of loans. The estimates for investment activities have been revised to rupees 93.6 billion as compared to the budget estimates of rupees 88.2 billion for the current financial year 2023-24. So the development expenditure. So here I would like to state, that our previous government presented the budget last year keeping in view end of its constitutional tenure in August 2023. We planned the development process so well that the pace of development activity continued even during the caretaker setup. Should have continued even more, even at a higher rate, but unfortunately I told you what the ECP did. It is because of this planning that the current fiscal year has witnessed the highest development expenditure ever. We estimate that the development expenditure will cross rupees 480 billion in the current financial year as against rupees 313 billion in last financial year. It is important to draw the House's attention to the fact that federal government in 2023, मैं आपको बता देता हूं सर, पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने 52.9 बिलियन फेडरल पीएचडीपी में रखे फॉर सिंध प्रोजेक्ट्स, और ये बड़ी मुश्किल से रखे गए थे इसलिए कि उससे पहले 4 साल सूबा सिंध को कोई एक स्कीम नहीं दी थी, वो जो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने। और फिर जब हम कोलेशन का पार्ट बने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी फेडरल के गवर्नमेंट के लोग, उनके प्रेशर की वजह से और उनकी जस्टिफिकेशन की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 53 अरब रुपए डाले थे 2023-24 में फेडरल पीएचडीपी में फॉर सिंध प्रोजेक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ इन 53 अरब से। सो मच सो कि 29 जनवरी 2024 को, यानी इलेक्शन से 8-9 दिन पहले, केयरटेकर गवर्नमेंट एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाती है और कहती है कि जिन प्रोजेक्ट्स में जीरो एक्सपेंडिचर है उन सबको निकाल दो। अच्छा, सिंध को मैंने आपको बताया पिछले 4 साल में एक स्कीम नहीं दी, तो हमारे तो सारे नए प्रोजेक्ट्स थे। 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स सिंध के निकाल दिए इन लोगों ने। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हमने दोबारा केस पेश किया एनईसी में, हमने रिवर्स कराई वो डिसीजन केयरटेकर गवर्नमेंट की, और वो 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स दोबारा इंक्लूड हुए। और ये जो साल अभी आ रहा है उसमें
पिछली साल उन्होंने 23 अरब रुपए रखे थे फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, जो जिसपे 88 अरब थे, और 25 अरब रुपए रखे थे हाउसिंग के लिए, 5 अरब एजुकेशन के लिए। अगले साल इन पहले प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब रुपए रखे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। अब ये हमने उनसे ये पैसे लेने भी हैं, और मैं जरूर अपने ऑगस्ट हाउस को, अपने कॉलीग्स को उसकी अपडेट देता रहूंगा कि कितने पैसे है, ताकि हम आपकी भी मदद और आपकी आवाज भी हमारे साथ हो फेडरल गवर्नमेंट से अपना हक लेने के लिए। मैंने ये सारी So moving to the figures, the revised estimates for 23-24 for provincial development expenditure stand at rupees 549.5 billion. It includes 283 billion for provincial ADP, 24 billion for district ADP, and 240 billion for foreign project assistance. So कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं जो हमारी पिछले साल हुई। हमने सिंध इरिगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम 6.12 अरब रुपए का कंप्लीट किया है। खिपरो से उमरकोट रोड 4.1 अरब रुपए का हमने कंप्लीट किया है। Reconditioning of Mehran Highway from Landi, Karachi to Port Qasim, 1.76 billion. Construction of new 100 MGD pump house at Dhabiji costing 1.62 billion. आप अगर rehabilitation, reconstruction of Shara Noorjahan from Abdullah College to Kalanaria Chowk, costing 3.36 billion. Benazir Institute of Urology and Transplant, District Shahid Benazirabad में 1.5 अरब रुपए की हमने कंप्लीट की है। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी डिटेल्स बजट बुक्स में भी हैं, और आपको एक और किताब मिली होगी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से, उसमें भी ये सारी डिटेल्स हैं। मैं वक्त नहीं लूंगा आपका डिटेल्स को बताने के लिए। प्रोविंशियल रिसीट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स एंड, ये प्रोविंशियल रिसीट्स पे आता हूं मैं। सिंध इज लार्जली रिलायंट ऑन फेडरल ट्रांसफर्स बीइंग principal component of our resource envelope. It comprises share from divisible pool and straight transfers. Revised estimates of federal transfers have been proposed to be rupees 1.395 trillion as opposed to rupees 1.353 trillion for the financial year 2000, as budget estimates of 1.353 trillion for financial year 2023-24. Revised estimates for divisible stand at 1.264 trillion rupees as against budget estimates of 1.255 trillion, and customs and federal excise duties of rupees 79.6 billion and rupees 81.98 billion respectively. Revised estimates for straight transfers stand at rupees 97.44 billion against budget estimates of 64.42 billion for the year 2023-24. We expect to receive the budgeted amount by the end of current financial year 2023-24. ये सारे पैसे हमें मिले नहीं हैं, अभी 2 किस्तें आनी बाकी हैं। एक 17 को शायद ना आए, ईद का दिन है, उसके बाद आए, या हो सकता है आज आखिरी दिनों को, हो सकता है आज आ जाए हमारी सेकंड लास्ट किस्त, और एक 30 जून को जो किस्त आनी है तब वी आर होपिंग दैट द फेडरल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस विद दिस मनी। सर, हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में मैं बता दूं। हम सबसे ज्यादा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस हमारा अगेन एक सक्सेस स्टोरी है। सिंध सेल्स जो हमारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, हमने 2012-13 में बनाया था। 18th अमेंडमेंट से पहले ही वैसे तो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशियल सब्जेक्ट था हमेशा से, लेकिन फेडरल उसको कलेक्ट करती थी। 2002 की वक्त में प्रोविंशियल असेंबली ने उस वक्त में उनको इजाजत दे दी थी, और जब आखिरी उन्होंने हमारे लिए कलेक्ट किया तो उन्हें तकरीबन 14.5 अरब रुपए कलेक्ट किए थे फेडरल गवर्नमेंट ने, जो सिंध हुकूमत को दिए थे। हमने वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशियलाइज किया, एनएफसी अवार्ड 7th एनएफसी अवार्ड में उसको लिखवाया स्पेसिफिकली, और हम पहला प्रोविंस थे जिसने वो कलेक्ट करना शुरू किया। पहले ही साल में हम 14.5 से 25 अरब पे गए, और ये जो साल गुजरा है उस पे हमारा टारगेट 235 अरब रुपए है फॉर सेल्स टैक्स एंड सर्विस, और इंशाल्लाह ताला हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 78 बिलियन का है। उसके साथ साथ हमारी जो प्रोविंशियल रेवेन्यूज हैं वो इस साल के 475 बिलियन टोटल होने हैं। इसके अलावा जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस हमें इस साल मिली है, एंड दिस ऑल गोज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वो तकरीबन 240.07 बिलियन है, और इसकी और 4.9 बिलियन ऑफ बजटरी सपोर्ट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिल जाएगी। सर, अब मैं 2024-25 की बजट पे आता हूं, जो कि इंशाल्लाह ताला हम पास कराने जा रहे हैं।
सर ये बजट और अगले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इस मैनिफेस्टो जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अनवेल किया था, हमने अपनी सारी बजट और अगले 5 साल इस पे मॉडल करने हैं जो उन्होंने बातें कही थी। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो वफाक से ताल्लुक रखती हैं जो हम नहीं कर सक रहे, लेकिन जो सूबाई दायरेकार में आती हैं इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब ने जो एक नई सोच की बात की थी, नई सोच के साथ हम इस बजट पे पहले साल से काम कर रहे हैं और मैं बताऊंगा उसके बारे में कुछ आपको। So the budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3 trillion 56 billion. And as I told you earlier, it is a balanced budget. हमारी जो इनकम है उसी का हम उतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमारी पिछले सालों में डेफिसिट बजटिंग हो रही थी, लेकिन इस साल हम बैलेंस बजट लेके आ रहे हैं लोगों को होप देने के लिए, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट के टारगेट्स बहुत ह्यूज हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अगर ये टारगेट्स पूरे हुए तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरे जो प्लान्स है उसमें कामयाब होंगे। So current revenue expenditure for the next financial year is pitched at rupees 1.912 trillion, which is 33.5% higher than the budget estimates of 1.411 trillion in 2023-24. The increase is mainly due to inflationary impact on operating expenses, enhancements of grant and aid to non-financial institutions, including hospitals, public sector universities, local councils, necessary salary raise in shape of relief allowance to government employees, and raise in pension expenditure, as well as increase in pension. Major sectors which are going to record enhanced budgetary provision for next year, given the impact in general public welfare, are as follows. Sir, हमारा सबसे बड़ी contribution education में होगी. Education का budget हमारा on the revenue side is 454 billion rupees versus 334 billion जो इस current financial year में था. और this includes primary, secondary, middle school, colleges और university level. ये 36% increase है और ये हमारी total revenue expenditure का 25% बनता है. The provision of funds for Sindh Higher Education Commission is rupees 34.5 billion against last year's budget of rupees 23 billion. Universities का आपने सुना होगा फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक यूनिलैटरल फैसला करके आज से कोई 15 दिन पहले हमें पता चला और हमें सिंध हाई एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि जी वो कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं रखेगी, जबकि एनएफसी अवार्ड और सीसीआई की डिसीजन है कि जब अगला एनएफसी अवार्ड आए दे हैव टू कंटिन्यू फंडिंग द यूनिवर्सिटीज. उन्होंने उसको 2011 पे फ्रीज कर दिया. हमें अपने पास से जो पहले हम कभी नहीं करते थे, हमने पहले साल 5 अरब से शुरू किया और अब 34 अरब रुपए हम यूनिवर्सिटीज को दे रहे हैं. फेडरल गवर्नमेंट ने पहले अपनी फंडिंग रोक दी थी. जब हाई एजुकेशन कमीशन ने मुझे लिखा, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, मैं ग्रेटफुल हूँ पीएम साहब का कि उन्होंने जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि नहीं आप ये यूनिवर्सिटीज के पैसे दोबारा शुरू करें. तो वो तकरीबन 12 अरब रुपए जो सिंध की यूनिवर्सिटीज को मिल रहे थे वो मिलेंगे नहीं, तो एक और गैप हो जाता हमारे पास. Sindh government provides free textbooks to all students of pre-primary to matric in all government schools as well as its partner schools. For this purpose, the budgetary allocation for distribution of textbooks has been enhanced from rupees 2.5 billion to rupees 7.5 billion in 2024-25. Furthermore, rupees 12 billion has been allocated for purchase of furniture and fixtures in 3 phases, of which rupees 4 billion has been earmarked in 2024-25. Rupees 6.875 billion are allocated in the Sindh Reform Support Unit budget, which includes 2.375 billion for restoration of flood-damaged schools. Rupees 1.65 billion has been allocated for operationalization of non-formal education centers in district to reduce out-of-school children's rate. Moreover, rupees 800 million has been allocated for girls' stipends to encourage female literacy rate have been provided in budget 2024-25. So, हमारा दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर आफ्टर एजुकेशन जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जो इस असेंबली के जरिए हम रिक्वेस्ट करेंगे बजट अप्रूव करें, वो है हेल्थ सेक्टर. For the improved service delivery in the health sector, the budgetary provision has been proposed at rupees 300 billion against rupees 227.8 billion last year, with an increase of 32%. मैं सर और डिटेल्स छोड़ रहा हूँ. सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग यानी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हमारा तीसरा सबसे बड़ा
हेड जाता है उसमें 172 अरब रुपए हम प्रपोज करेंगे कि खर्च करें। लोकल काउंसिल्स जो कि थर्ड टियर गवर्नमेंट्स हमारी हैं, आपको याद होगा आज से 1 साल पहले जब पिछले साल हमने बजट अप्रूव किया था तो इन लोकल काउंसिल्स को 80 अरब रुपए मिलता था। ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल जुलाई अगस्त में हमने उसको बढ़ा के 120 अरब किया था। अगले साल 160 अरब रुपए हम प्रपोज कर रहे हैं फॉर लोकल काउंसिल्स, और ये हर लेवल पे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने डिलीजेंटली काम करके हर पे इंक्रीज होंगी। एक जो मुझे रेडली याद है, बाकी तो हर एक के अलग अलग हैं। जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनको हम, जो रूरल यूनियन काउंसिल्स हैं उनको 5 लाख रुपए देते थे, उनको अब 5 लाख की बजाय 10 लाख दिए जाएंगे। और जो अर्बन एरियाज में यूनियन काउंसिल कमिटीज हैं उनको 5 लाख उनको भी देते थे, उनको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे अगले साल से, ताकि वो कुछ अपने एम्प्लॉयज को भी सैलरीज दे सके और कुछ काम भी कर सके। इस तरीके से हर लेवल पे पैसे बढ़ाए गए हैं सर। उसके बाद इरिगेशन और थैंक यू, इरिगेशन सेक्टर जो है हमारा उसमें 35.9 बिलियन है, एग्रीकल्चर में 30.7, तो ये वाटर जो इरिगेशन से रिलेटेड तकरीबन 65 अरब रुपए इधर जाते हैं हमारी इरिगेशन के और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसके अंदर 7.62 बिलियन रुपीस हैं जो हम सब्सिडीज वगैरह देते हैं। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर 12.26 बिलियन है फॉर सिंध पीपल सपोर्ट प्रोग्राम। सर एक बड़ी एक्सपेंडिचर हमारी है सैलरीज की। आपने देखा होगा महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है, फिर टैक्सेस भी फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। हमने बड़ा गौर विचार किया इस चीज़ के ऊपर कि सैलरी इंक्रीज क्या होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड 25% ग्रेड 1 to 17 और 22% 1 to 16 और 17 अबव 22% की। पंजाब हुकूमत ने भी कल बजट अनाउंस किया, उन्होंने भी यही इंक्रीज की। हमने बैठ के बड़ी डिटेल्ड वर्किंग की। हमने देखा कि जो मिनिमम सैलरी हम रखना चाह रहे हैं, वो आगे उस पर आऊंगा, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो 37,000 रुपए हो। अच्छा 37,000 रुपए अगर मिनिमम सैलरी करते हैं तो हम सरकारी मुलाजिम को भी तो 37,000 रुपए दें। अगर हम 25% बढ़ा रहे थे तनख्वाह, ग्रेड 1 to 6 वाले सबसे ज्यादा वल्नरेबल तबका था हमारा, तो वो जो एंट्री लेवल थी उसकी तनख्वाह इस वक्त 28,000 रुपए है, वो 4,000 के करीब बढ़ के या 34,000 बन रही थी, 37 नहीं बन रही, 33,000 समथिंग बन रही थी। तो हमने क्या किया है कि ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर 30% तनख्वाह बढ़ने के बाद भी 37,000 रुपए नहीं बनती, इसलिए कि अगर आज मैं ग्रेड 1 में नौकरी करूं तो मुझे तकरीबन 32 साढ़े 32,000 रुपए ये 30% बढ़ने के बाद मिलेंगे, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि 37,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए, तो हम एज पर्सनल पे उन लोगों की जिनकी 37,000 से कम तनख्वाह है, हम एक पर्सनल पे एक डिफरेंशियल का देंगे ताकि उनकी मिनिमम तनख्वाह 37,000 रुपए हो जाए। ये सारे एम्प्लॉइज के साथ होगा और ये अफेक्ट होगा ग्रेड 1 to 6 तक। 6 के बाद ये नहीं होगा। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस, हम 1 to 6 की, और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। मिनिमम वेज की मैंने बात की। We are proposing that the minimum wage in this province be set at rupees 37,000. I know this is a proposal, और फिर हमारा लेबर डिपार्टमेंट एक तरीकाकार होता है जिसमें एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट साथ बैठ के एग्रीमेंट करती है। मिनिमम वेज बोर्ड होता है, वो मिनिमम वेज बोर्ड से हम इंशाल्लाह ताला चाहेंगे कि ये 37,000 रुपए की तनख्वाह पूरी हो। करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आता हूँ। अगले साल हम 184.8 बिलियन दे रहे हैं अगेंस्ट 136.256 बिलियन। इसकी मैं आपको मोटी मोटी बता दूं कि इसमें एक तो हम जो रिपेमेंट ऑफ लोन्स होती है करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो आता है, फिर हम वायबिलिटी गैप फंड जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर तकरीबन 60 अरब रुपए उसके रखे जा रहे हैं इसमें फॉर द करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बड़ी
ये हैं, फिर जो पेंशन फंड और उसको फंड करने के लिए ताकि हम आगे पेंशन की बोझ में और मैं प्रॉब्ली आज बहुत लंबी हो जाएगी स्पीच, अपनी वाइंडिंग अप पे जरा बताऊंगा कि हम क्या स्टेप्स रिगार्डिंग पेंशन्स लेना चाहते हैं इन द फ्यूचर ईयर्स। अब आते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। सर, Sindh is in dire need of infrastructure development post 2022 flood devastation. Because of the unwavering support of international donor agencies, we were able to steer the development activities in the last 2 years on a sustainable basis. I would like to thank all the international donor agencies for their support and commitment to the government and the people of Sindh.